change in government, unregulated buildings, high-rise buildings, different population coming to Bengaluru. What is the reason for the sudden scarcity of water in the silicon city of Karnataka? So why is the capital of Karnataka, Bengaluru, facing such huge water scarcity? So इस वीडियो में जो है देखेंगे कि what is the reason for Bengaluru's water scarcity, and watch this video till end because today it is Bengaluru, tomorrow it can be any part of Karnataka, it can be any part of India where you can face scarcity of water. So let's start the video. To understand the scarcity of water in Bengaluru, you should know the hydrogeology of Bengaluru. What is hydrogeology of Bengaluru? The hydrogeology of water is from where does Bengaluru gets water, what is the natural source of water Bengaluru has, how the water supply in Bengaluru is divided. You have to understand this before you say which part of Bengaluru is facing scarcity of water. So Bengaluru has two parts. One is the part of Bengaluru which gets the pipeline water, and the second is the part of Bengaluru which depends on the groundwater for its daily needs. सो बेंगलुरु का जो सेंट्रल बेंगलुरु है, दी ओल्ड बेंगलुरु है, उसको तो जो है डेफिनेट पाइपलाइन वाटर से, पाइपलाइन सिस्टम से जो है वाटर पहुंचता है. सो दे डू नॉट हैव द बर्nt ऑफ द स्कैसिटी ऑफ वाटर विच बेंगलुरु इज फेसिंग. द मेजर पार्ट्स ऑफ बेंगलुरु विच इज फेसिंग द वाटर स्कैसिटी इज द आउटस्कर्ट्स ऑफ बेंगलुरु. Call it as outskirts, but it is part of Bengaluru, the newer Bengaluru, which is widespread across the Bengaluru, which is facing the burnt of scarcity of water because they mainly depend on groundwater for the daily water requirement. अब ये जो है daily water requirement को इनके पास बोरवेल है, बोरवेल से पानी क्यों नहीं आ रहा है? So for that you have to understand the aquifer system of the groundwater. Karnataka depends upon the monsoon for its major water supply because compared to the underground water, the important source of water for Karnataka is the monsoon. In 2023, Karnataka got 18% less monsoon compared to the previous years. The reason for drought in Karnataka is mainly the failed monsoon in 2023, which received 18% less rainfall. When compared to other states like Telangana, Bihar, Jharkhand and Uttar Pradesh, which got 35% and 25% lesser monsoon, still they are not that much hit as Bengaluru is hit. The reason for this drought is by the aquifer system what Karnataka has. Now what is aquifer system? What is groundwater system in Karnataka? The aquifer system is that system where the water, when you have a rainfall, the groundwater which absorbs the rainwater and stores it. But as Karnataka and majorly Bengaluru में जो है, you have the very rocky type of aquifer system where जो है the storage यानी कि जो water holding capacity of the ground is much lesser compared to the other states. So जो है जितना जल्दी जो है it can absorb the water, उतना जल्दी ही जो है the minute you put a borewell, the water comes out so fast that the aquifer system fails very easily in Karnataka. So that is the reason Bengaluru has failed borewell system at present. The main reason for scarcity of water in Bengaluru is the failed monsoon, and second is the failed aquifer system because of the soil conditions what Bengaluru has. So ये कहना कि भाई चेंज इन गवर्नमेंट, डिफरेंट पॉपुलेशन, द नॉर्थ इंडियंस हैव कम एंड यहाँ पे बस गए हैं, इसकी वजह से जो वाटर स्कैसिटी है, या जो है बिल्डिंग्स, हाई राइज बिल्डिंग्स आ गए हैं, लेक्स में जो है कब्जा कर लिए हैं. दीज आर ऑल वन ऑफ द रीजन फॉर स्कैसिटी ऑफ water in Bengaluru. But the major reason is कि भाई aquifer systems have failed because of consistently जो है drilling borewells. Unregulated use of borewells and groundwater has led to the scarcity of water. Even today, the Bengaluru, which is supplied with pipeline water, which is supplied from KRS dam, they have not faced this scarcity. Scarcity is mainly faced by the people of outskirts of Bengaluru who are mainly dependent on the borewell system or the groundwater system for the daily needs. सेंट्रल वाटर कमीशन के रिपोर्ट के हिसाब से अगर जो है बेंगलुरु में और जो है आने वाले दिनों में अगर जो है बारिश नहीं हुई तो जो है जुलाई के बाद से जो है सीवियर ड्रॉट हिट होने का चांस है, क्योंकि एट प्रेजेंट जो है द रिजर्वायर व्हाट द अंडरग्राउंड वाटर इज होल्डिंग इज जस्ट 26%, which is 10% lower than the actual what is required. So if this is the same scenario, by end of July the total Bengaluru will be hit
by drought and there will be a severe consequence अगर ऐसे ही चलता रहा तो. Is only Bengaluru hit with this water scarcity? No, the entire Karnataka is facing, जिसमें जो है 7,000 villages have been hit, 11,000 wards and 220 talukas have been hit with this water scarcity. And the Krishnarajasagar dam has hit 5-year low in this February, and the whole reason is because of the failed monsoon in Karnataka. The present scenario of Bengaluru is कि भाई बेंगलोर में लगभग जो है 11,000 के करीब बोरवेल्स हैं, जिसमें 1.5 यानी कि 1,500 बोरवेल जो है ऑलरेडी फेल हो चुके हैं, यानी कि टोटली दे हैव बीन ड्राइड अप. द रीज़न इज़ कि एक एनालिसिस किया गया है जिसमें दे हैव डेटेड बैक टू 800 ईयर्स पीछे का जो है डाटा निकाल के उन्होंने जो है इसको एक फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश किया है कि व्हाई दिस इज हैपेंड इन बेंगलुरु व्हेन केआरएस इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर टू बेंगलुरु. इसमें पता चला है कि भाई स्टिल इंडिया डजंट हैज़ ए सिस्टम टू मेंटेन ड्रॉट, यानी कि भाई अगर इंडिया में 2 या 3 साल तक अगर ड्रॉट हुआ तो हमारे पास कुछ भी सिस्टम नहीं है जिसमें कि वी कैन स्टोर वाटर फॉर सच लॉन्ग टाइम, बिकॉज जो है एक्विफाइंग सिस्टम होंगे या ग्राउंड वाटर सिस्टम होंगे, दे कैन नॉट होल्ड वाटर फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन. एंड द सेकेंड थिंग इज कि भाई if we don't start using water meticulously now, today it is Bengaluru, tomorrow it can be any city, any state of India. The reason is कि भाई dysregulated buildings जो है, जो रेगुलेशन के खिलाफ बिल्डिंग्स बनना, लेक्स को कन्वर्ट करके प्लॉटिंग करना, excessive wastage of water, these are all one of the few reasons for scarcity of water. We have to use water meticulously. An average Bangalore person uses around 150 liters of water per day. So इस हिसाब से 14 मिलियन रेसिडेंट्स के लिए जो है 2 लाख मिलियन क्यूबिक वाटर की ज़रूरत है, और एट प्रेजेंट व्हाट बेंगलुरु इज गेटिंग इज ओनली 500,000 मिलियन cubic of water, which is just 1/5 of what the actual requirement of water is there in Bengaluru. So इसको कर्ब करने के लिए the Bangalore Water Supply Department has come up with a solution where it's going to provide only 20% of the actual water requirement to 0.3 million people, which are the major यानी कि bulk water users हैं. उनको जो है BBMP ने जो है यानी कि बेंगलोर का जो वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट है, they have cut down the water supply from 100% to just 20%. इससे जो है they can maintain an adequate water supply till जुलाई ऑफ दिस ईयर. ये भी जो है ये ऐसे कट डाउन करने से जो है जुलाई तक जो है सफिशिएंट वाटर इनके पास मिल जाएगा. प्रॉब्लम इज कि अगर बारिश नहीं हुई, इफ द मानसून डजंट सेट इन, द कंडीशन अबाउट जुलाई इज रियली स्केरी. सो व्हाट वी हैव टू डू नाउ इज, वन इज एट द सेंट्रल लेवल हम लोगों को जो है पानी स्टोर करने का एक एडिक्वेट सिस्टम बनाना चाहिए. इवन इफ वी आर हिट बाई ड्रॉट फॉर 1 or 2 years, वी शुड हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर. उसके लिए जो है वी शुड हैव सेंट्रल रेगुलेटेड मेजर्स. सेकेंड थिंग इज एट द पर्सनल लेवल वी हैव टू stop wasting water, क्योंकि we think water is a free consumable, so we try to waste water as much as possible. And if you are using water as unnecessarily, stop using water unnecessarily, use water meticulously and save the country from drought. इस वीडियो को यहाँ तक देखे हैं तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर बनता है, एंड मिलेंगे अगले वीडियो में. तब तक के लिए स्टे सेफ.